हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर निमोलांशु हियर। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कैसे होता है। जैसे हमने एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड इन दैट जिंक रॉड वाज डिप्ड. ओके, so as the time goes on, we have seen that zinc rod started losing its weight, and also the intensity of copper sulfate solution is gradually decreasing, and after some time it is seen that zinc rod has lost its weight and copper is deposited on the zinc rod as well as at the bottom of the beaker. So we have interpreted that observation that zinc rod is losing electron to become Zn2 positive. So zinc, that interpretation is zinc which was in solid form, it is losing electron to become Zn2 positive, which is in aqueous form, plus 2 electron. So this copper sulfate solution, it is in copper sulfate solution. So copper is in 2 plus state, so it is in aqueous solution, plus SO4 2 minus, it is in aqueous form, and it is taking that electron, 2 electron, and it is becoming copper solid, okay, which is deposited at the bottom of beaker, and also and some portions also deposited on the zinc rod. So and sulfate ion is remaining untouched. Okay, so the overall reaction which is that zinc solid is in reacting with copper 2 plus, which is in aqueous form, giving rise to zinc 2 plus, which is in aqueous form, plus copper solid. And this ion, sulfate ion, SO4 2 minus dinegative ion, is not at all taking part in the reaction. It is just observing what is going on, what the process is going on in the reaction. It is just observing that one. So that is why this sulfate ion is termed as spectator ion. क्या बोलते हैं इसको? Spectator ion. Okay, because हमको पता है कि when any political leader gives some speech, at that time the leader is called the speaker, and he is giving speech. तो वो speech किसके सामने देते हैं? ऑडियंस के सामने देते हैं. तो ऑडियंस को बोलते हैं हम स्पेक्टेटर. ओके, जो सिर्फ जिसका काम है सिर्फ सुनना, और जिसका काम है सिर्फ सुनना और देखना, बाकी कुछ नहीं है. तो यहाँ पे काम कर रहा है कौन? पॉलिटिकल लीडर, द स्पीकर हु इज स्पीकिंग. सो यहाँ पे सेम सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो. जिंक इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, जिंक इज लूजिंग 2 electron, and that 2 electron is being taken up by copper 2 plus, becoming copper solid, which is deposited at the bottom of beaker, and also on the zinc rod. And zinc rod has lost its weight because zinc rod has is being converted to Zn2 plus. And a sulfate ion which is in the reaction mixture, it is not at all taking part in the reaction, just it is observing what is going on in the process. So that is why this sulfate ion is called spectator ion. Okay, तो लेकिन उल्टा नहीं होगा. उल्टा copper will not give electron to copper will not give electron to Zn2 plus. Okay, there will be no reaction. Okay, similarly हमने देखा है कि if we take copper and silver nitrate solution, copper sulfate and silver nitrate solution, so copper 2 plus, which is in aqueous form, it is giving electron. It is copper 2 plus नहीं, copper solid, copper solid. It is copper solid. It is taking 2 electron. It is silver, and silver is giving to 1 electron. Okay, so it is becoming, copper is becoming Cu2 plus. Okay, and
silver is coming as solid form. Okay, means silver will get deposit on the copper. Okay, so that is why silver will get deposit on the copper. तो मतलब अगर जिंक और कॉपर लिया जाए तो जिंक इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, और अगर कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट लिया जाए तो कॉपर इज गिविंग इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर. ओके, तो मतलब क्या है कि ये अगर जिंक अगर ऊपर में ये ऐसे रखा जाए, ये इसको कॉपर देन सिल्वर. ओके, कॉपर, जिंक, कॉपर एंड सिल्वर. तो जिंक विल डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कॉपर. ओके, एंड कॉपर कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर. दैट इज व्हाई ये भी एक कारण है कि कॉपर कैन नॉट बी सिल्वर नाइट्रेट cannot be stored in a copper vessel. That is why reason why silver nitrate cannot be stored in the copper vessel. Okay, तो ये हम मतलब सेकेंडरी में पढ़ेंगे इसका डिटेल्स में. तो मतलब जिंक क्या करेगा, जिंक कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, एंड अब अगर कॉपर और सिल्वर लिया जाए तो कॉपर कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर. सो means the donation of electron tendency is zinc greater than copper greater than silver, and that is being put in a series that has been. So electron donating tendency means the species which is donating electron, that is also called as reducing agent. जिस जो हमने अपना सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, the metal or element which is donating electron, that is called reducing agent. So that means the reducing tendency is zinc greater than copper, that copper greater than silver. Means so this, based on this, these metals are put in a series which is called activity series of metals, okay, which is called activity series of metals. तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज में जैसे पोटाशियम सबसे पहले आता है, पोटाशियम, देन आता है सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. तो इसको ठीक तरह से मतलब लिखते हैं इसको. सो पहले आता है क्या, पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पोटाशियम, देन सोडियम, देन बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक. ओके, सो देन क्रोमियम, आयरन, कैडमियम. देन आता है हमारा कोबाल्ट, निकल, लेड, टीन, ओके, कोबाल्ट, निकल, टीन, लेड. देन आता है हाइड्रोजन, यहाँ पे बीच पे आता है हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख रहे हैं कि इसका भी एक कारण है, हाइड्रोजन. देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, मरकरी. देन यहाँ पे जाएंगे हम क्योंकि लैक ऑफ स्पेस. सो कॉपर, मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लैटिनम इज द least reactive metal, whereas potassium is the most reactive metal. So this is called activity series of metals. Okay, this most reactive metal. Okay, so this is called activity series of metals. Okay, so activity tendency, electron releasing tendency is decreasing in this way. So मीन्स मतलब तो देखो क्या होता है कि जिंक ऊपर है, देन आता है हमारा कॉपर, देन आता है हमारा सिल्वर. तो जिंक कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू कॉपर, एंड सिमिलरली कॉपर कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर.
ओके, जिंक कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एंड कॉपर कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर, लेकिन उल्टा नहीं होगा, सिल्वर कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन टू कॉपर एंड कॉपर कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन टू जिंक, मीन्स द reducing tendency is zinc is greater than copper. Reducing tendency means electron donating tendency is zinc greater than copper greater than silver. Okay, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि जिंक बेसल में कॉपर को हम रख नहीं सकते, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम जिंक बेसल में रख नहीं सकते, क्योंकि कॉपर विल गेट डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ जिंक बेसल. Copper will get deposit on the surface of vessel. Similarly, silver nitrate cannot be stored in copper vessel. Silver will get deposit on the surface of silver nitrate cannot be stored in copper vessel. So silver will get deposit on the surface of copper vessel. Okay. So that is the reason why. That is why therefore zinc cannot be stored in zinc cannot be stored in copper उल्टा होगा, copper cannot be stored in zinc vessel. तो क्या होगा, कॉपर का एक लेयर हो जाएगा जिंक वेसल में, कॉपर विल गेट डिपॉजिट ऑन दी जिंक वेसल. सिमिलरली क्या होगा, सिल्वर कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. सिल्वर नाइट्रेट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल. ओके, सो क्या होगा, सिल्वर का एक लेयर डिपॉजिट फॉर्म हो जाएगा कॉपर वेसल में. ओके, और एक बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, द मेटल्स व्हिच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. सो जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, द मेटल्स व्हिच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन, वो क्या करेगा, that metal upon reacting with the metals which are above hydrogen in the activity series of metals, that metal what it will do, that metal will displace hydrogen on reacting with dilute acid. तो मतलब जैसे जिंक अगर रिएक्ट करेगा HCl के साथ और H2SO4 के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व. सो the metals which are above hydrogen in the activity series, those metals can displace hydrogen if on reacting with dilute acids like HCl and H2SO4. Okay, so that is for those metals are called active metals. Those metals are called active metals. And the metals which are below hydrogen in the activity series, that metal cannot displace hydrogen on reacting with dilute acids. So those metals are called inactive metals. Those metals are called inactive metals. Okay. So ये हो गया हमारा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में कुछ डिस्कशंस. ओके, next we are going to start one topic which is called oxidation number. Oxidation number क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, इस चैप्टर हम डील कर रहे हैं, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन लूजिंग एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग को लेके. ओके, सो इलेक्ट्रॉन लूज, the process where the electron lose is taking place, that process is called oxidation, and the process where the electron gaining is taking place, that process is called रिडक्शन. ओके, सो मतलब ऑक्सीडेशन होने के बाद जो स्टेट ऑफ मेटल होगा, स्टेट ऑफ मेटल और एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीडेशन मीन्स आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is called oxidation state, and the number is called
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे हम लिख रहे हैं ना, जैसे हम लिख रहे हैं कॉपर 2+, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, 2+ इज ऑक्सीडेशन नंबर, देन जिंक 2+, देन Ag+, वो प्लस Ag+ मतलब +1। सो दिस आर ऑल कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर्स। ओके, अभी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने का रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, चलो देखते हैं ये रूल्स क्या क्या होता है। ओके, तो रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो रूल्स क्या क्या होता है, रूल्स मतलब देखो क्या क्या हो रहा है रूल्स। ग्रुप 1 मेटल्स, जो भी ग्रुप 1 मेटल्स है, ऑल दिस हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। ग्रुप 2 मेटल्स, जितना भी ग्रुप 2 मेटल्स है, ग्रुप 1 मेटल्स मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम and francium, all these have oxidation number +1. Group 2 metals like beryllium, calcium, beryllium, then magnesium, then calcium, then strontium, then barium, then radium, all these have oxidation number +2. All halogens, extreme right में all halogens जो भी जितना भी है, like all halogens मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, all these have oxidation number -1. Oxygen have oxidation number -2, but in some compounds means peroxides, where there is peroxide linkage, peroxo लिंकेज होने से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। ओके, पेरोक्सो लिंकेज होने से ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन का डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ओके, +2 होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ओके, नाइट्रोजन, ऑल दिस इन नाइट्रोजन ऑल दिस हैव ऑक्सीडेशन नंबर -3, नाइट्रोजन हैव ऑक्सीडेशन नंबर -3। in elementary form, the oxidation number of element in the elementary form is 0. For example, H2, N2, O2, Cl2, Cl2, P4, S8, सबका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। ओके, so the elements in the elementary form is, the oxidation number of elements in the elementary form is 0. For example, कॉपर, अगर सिंपल कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। बट व्हेन इट इज बॉन्डेड विथ एनी मेटल लाइक सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। but when it is bonded with any metals like sodium hydride, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, इस सब में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज -1, लेकिन अदरवाइज हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। अभी जो मतलब ये होगा, एक मोलिकुलर आयन होने से मोलिकुलर आयन लाइक एग्जांपल है SO4 2-, ओके, CO3 2-, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर है इज द चार्ज ऑन द आयन, ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज ऑन द आयन। तो मतलब इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर है
-2। अभी अगर किसी कंपाउंड बोला जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? सपोज जो देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर सपोज बोला गया है कार्बन का ऑक्सीडेशन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH4 ml इन KMnO4। तो C का बोला गया है, जैसे नंबर 1 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं CH4 में, तो कार्बन का निकालना है ना, तो कार्बन का निकालना है तो इसको लेंगे X प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, ओके, इज इक्वल टू, इट विल बी सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब X इज इक्वल टू +4 आ रहा है। Mind it, my dear student, while writing oxidation number, you have to give the sign. If you write just 4, it is false. Answer is wrong. You have to give plus. You have to assign the sign. Sign assign करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि बोला गया है नंबर 2 है, हम देखते हैं KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर Mn in KMnO4, ओके। तो मतलब मैंगनीज का निकालना है ना, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1 है, बिकॉज पोटेशियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 मेटल, प्लस X प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -2 इज इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +7। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 में, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है +7। नंबर 3 देखते हैं क्रोमियम इन K2Cr2O7, ओके। तो K कितना है +1, सो 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू X, क्रोमियम का निकलना है ना, सो 2 क्रोमियम है 2 इंटू X प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, which is equal implies 2 plus twice X plus -14 is equal to 0. So twice X equal to 12, X equal to +6। मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम इन K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ओके। N in HNO3, ओके। तो N in HNO3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो चलो देखते हैं इसका भी देख लेते हैं। तो N in HNO3, P in पहले देखते हैं P in H3PO4, P in H3PO4। तो हाइड्रोजन का कितना है +1 3 इंटू +1 प्लस फॉस्फोरस का निकालना है X, तो +4 इंटू ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3 प्लस X प्लस -8 इज इक्वल टू 0, दैट इज X इज इक्वल टू +5, X इज इक्वल टू +5। अभी निकालना है N in HNO3, तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है +1, सो +1 प्लस नाइट्रोजन का X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, सो विच इम्प्लाइज 1 प्लस X -6 इज इक्वल टू 0, दैट इज X इज इक्वल टू +5। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर जस्ट नंबर मत लिखना, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, this you will get very much important, very much common, because you will get 2 problems related to that in your final exam. You will definitely get 2 problems related to the finding of oxidation number in the final exam, okay? So तब अगर कोई स्टूडेंट अगर x इक्वल टू 5 देके आ गया ना, अगर राइट भी है तो भी एग्जामिनर रॉन्ग देगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर always comes with a sign. It should be plus sign or minus sign, okay? तो जैसे है सल्फर इन H2SO4, इसका भी निकालते हैं सल्फर इन H2SO4। तो ये अभी देख लेते हैं सल्फर इन H2SO4, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, प्लस X प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन का कितना है -2 इज इक्वल टू 0,
that is 2 plus x minus 8 is equal to 0, which implies x is equal to plus 6, which implies x is equal to plus 6. ओके, तो ऐसा बहुत सारा है एनसीईआरटी बुक में, बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया गया है. सो माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट you people should practice it, and if you find any problem in practicing in finding the oxidation number of any element of any compound, then you are free to ask me about that. Okay, so your exam has already started, so all my best wishes for your chemistry exam. So study well, stay safe. Okay, with this I want to conclude, my dear students. Thank you very much, my dear students. Thank you.